आप आईएएस ऑफिसर आप बनना चाहती थी, तो आरबीआई ऑफिसर तो बनी गई आप। आरबीआई ऑफिसर एटलीस्ट बनी है, एंड आई होप फ्यूचर में आईएएस भी बन जाऊंगी। फर्जी में जिस तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आई आई थिंक कमाल का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। थिंक द कास्टिंग was really perfect. Like I also thought that maybe this is tailor made for me because I really enjoyed playing her and I felt like Megha after a certain point. So I think they could visualize it very well, and I think most of the credit goes to Rajan Dikesa and also Mukesh. राशि, आपकी 2022 में आपकी दो बहुत बड़ी हिट फिल्म्स आपकी आई। एक धनुष के साथ में, एक सरदार आपकी आपकी फिल्म आई थी। I remember having that conversation with Dhanush जहाँ मैंने धनुष को बोला भी था, मैंने कहा धनुष मेरा जितना भी पार्ट है just make sure that it's we added certain elements कि वो ऐसे नजरअंदाज ना हो जाए फिल्म में. You're a Shah Rukh Khan fan as well, and you are literally hoping that it works entirely for him. I really relate to him somewhere as a person, and I love watching him talk. For me, he inspires me as a person more than anything else. राशि खन्ना, pleasure having you with me on Connect FM Canada. कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। So आप आईएएस ऑफिसर आप बनना चाहती थी, तो आरबीआई जी, ऑफिसर तो बनी गई आप। आरबीआई ऑफिसर एटलीस्ट बनी है, एंड आई होप फ्यूचर में आईएएस भी बन जाऊंगी. That's the beauty of being an actor. You can play everything that you may wanted to become, I think. So अभी मैं आरबीआई ऑफिसर बन गई, and hopefully in some place I can be an IAS officer at least on screen. बिकॉज देखिए, जैसे फर्जी में फॉर एग्जांपल जिस तरीके की इंट्रिकेट सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी थी, सो मुझे ऐसा लगा कि दैट इट केम रादर नेचुरली टू यू, एंड आई थिंक कंसिडरिंग जो आपके जिस तरीके के एस्पिरेशंस थे, तो मुझे लगता है कि दैट कोई कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है उसने भी। I think aspirations were to become an IAS officer, but uh, to be an RBI officer, I mean, of course, you're an officer and you have to work on yourself, and probably just the dressing part, I can say, really adds to what you're trying to project, but you have to really get into that personality also. Abhi, I understand where you're coming from, where you're saying agar officer hai, like even if she's an RBI officer or she's an IAS officer, now IAS officer comes with a sense of power also. Here in my case, I was always the subordinate, trying to rise up through the ranks. So it was different. I mean, it was a completely different experience. And I think जब मैं IAS officer play करूंगी तो शायद वो बहुत अलग experience होगा. ओके, सो एक बहुत ही रियल किरदार जो प्ले करना अगर आपको जैसे मिला है, और इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें उसमें ह्यूमरस शेड्स भी हैं, लेकिन ह्यूमर जो है वो लाउड नहीं है, कि वो लड़का देखने के लिए जा रही है, जिस तरीके का मदर के प्रेशर्स हैं, एंड द वे शी हैंडल्स इट। सो ये ह्यूमर जो है वो यूजुअली फिल्मों में इस तरीके का ह्यूमर बहुत बार नहीं होता है। फिल्मों में थोड़ा सा लाउड होता है, इट्स प्लेइंग टू द गैलरी होता है। दिस इज मोर सटल, दिस इज लाइक मोर राज एंड डी के स्टाइल, के सब टेक्स्ट में जो है वो एक ह्यूमर की परतें होती हैं। कितना कितना मजा आया आपको एक एक्टर के तरीके के तौर पे, कितना मजा आया आपको इस तरीके के किरदार प्ले करने में? I think honestly being real is more difficult than being animated on screen. थोड़ा एनिमेशन में अगर आप चले जाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, but when you're in the real space and to bring comedy to a real space is very difficult on screen, on camera, even as an actor. But I think the dialogues really supported us. The way it's written really supported us. We didn't have to do too much to get the comedy out because the dialogues were written in that way. And obviously there are little nuances of suddenly वो message करती है, then you're looking how you will behave in a real setting. So Raj and DK were very clear that they wanted it to be as real as possible. They said आप भूल जाओ कि cameras हैं, आप भूल जाओ कुछ भी है, like how will you behave in a setup like this where your mother's actually constantly doing this. So I think that is just very organic comedy that comes through, and I feel times are changing and people are actually liking that more because that's more relatable than the animated stuff we've seen so far in movies before. और ये मुझे लगता है कि राजन डीके का थोड़ा सा, आई थिंक उनका एक कुछ पैशन भी है। फैमिली मैन टू में उन्होंने समांथा को उन्होंने एक तरीके से रियल किरदार में, जो आई थिंक हैज अर्नड हर सो मच ऑफ प्रेज फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट मेनली इंडिया। और अभी फर्जी में जिस तरीके का आपको रिस्पांस मिल रहा है, आई थिंक कमाल का रिस्पांस आपको मिल रहा है। सो ये कुछ मेरे ख्याल से आई थिंक राजन डी के दे हैव अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग their actors maybe. So I think for me, I don't know how they thought of Sam for Family Man, but she was perfect in that role. But I think मेरे लिए they had seen an old audition of me जो मुकेश छाबड़ा के पास था। मेरा एक बहुत पुराना ऑडिशन उन्होंने देखा, उसमें भी बहुत रियल एक
scene. I was playing a very real character in a scene, and I think they saw that, and they saw some snippets of me from this film called Toli Prema, which was a little real and it was a love story. तो वो देख के उनको लगा that she looks the part and she can be she can be Megha. I mean, and after seeing that audition, they were convinced that I was Megha. And Raj sir told me that he really liked the quality of my voice. So he said, I thought this would really suit the character that we really want. So I think that way, I think the casting was really perfect. Like I also thought that maybe this is tailor-made for me because I really enjoyed playing her and I felt like Megha after a certain point. So I think they could visualize it very well. And I think most of the credit goes to Rajan Dikesa and also Mukesh. राशि, आपकी 2022 में आपकी दो बहुत बड़ी हिट फिल्म्स आपकी आई, एक धनुष के साथ में, एक सरदार आपकी फिल्म आई थी. दोनों आई थिंक दे वर ह्यूज हिट्स एंड क्रिटिकली भी उसमें बहुत आपकी तारीफ हुई है दोनों फिल्मों में. सो एक उससे पहले पैंडेमिक में आपकी कुछ फिल्म्स आपकी ओटीटी पे आई हैं. नाउ दो बड़ी हिट फिल्म्स के बाद में एक आपका वन मोर डिजिटल रिलीज आपका होता है. तो ये कैसा एक आपका एक्सपीरियंस आपका रहता है? बिकॉज मेनी टाइम्स जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको थोड़ा सा स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, दैट ये बड़ा पर्दा है, ये ओटीटी है. लेकिन you are just being very comfortable in both the worlds and gaining equal amounts of success. So I think I don't see OTT as different from film. Of course, as an audience, there's a different experience you have watching a film on the big screen or जब आप OTT पे show देखते हैं, तो of course the experience is very different. But I think character जो आप play करते हैं, जो आप किरदार निभा रहे हैं, you just have to be true to that, be it an OTT platform or be it a film. Because you have to be true to the craft and it really doesn't matter कि platform क्या है. तो I think that's why probably मैं बहुत comfortable थी OTT space में भी, and OTT never felt like OTT, it felt like an extended film. Especially when I was shooting with Rajan DK, I felt like this is like a long film. That's how I felt, with more fleshed out characters. So I think OTT का अपना benefit है for actors especially because I feel हमें ज़्यादा in depth characters मिलते हैं. फिल्म में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, you don't get to flesh it out as much as on OTT. So I as an actor enjoy both the platforms and I think both of them have worked out well for me. And I think in future maybe I just have to balance both because obviously as an audience I would love to see actors in films also and probably in OTT also. So I think it's a great balance and I think it is the time. It is the right time to be into acting and to explore your talent and because there are so many opportunities now. ओके, नाउ आपके जितनी भी आपकी फिल्म है, मद्रास कैफे से अगर हम बात करें, मद्रास कैफे में भी आपके काम को पसंद किया गया और अप्रिशिएट किया गया. थोड़ा सा साउथ इंडिया की जो फिल्म्स है उनका कल्चर थोड़ा सा ये होता है दैट इट इज मेनी अ टाइम्स इट इज हीरो ड्रिवन, और यू हैव वर्क विद ऑल द बिग स्टार्स डाउन साउथ. लेकिन आपके जितनी भी फिल्में हैं, एक आपको हमेशा आपके परफॉर्मेंसेस को, आपके किरदारों को क्रिटिकली जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यूनानिमसली. ये कितना जरूरी है आपके लिए कि टू जस्ट stand shoulder to shoulder with any co-star that you may possibly have? See, I feel a lot of times people have asked me कि आप intimidate हो जाते हैं क्या set पे, when you're working especially with big actors, and I'm like, अगर मैं intimidate हो जाती हूँ then that means I'm cheating my craft. So when I go on set, I think with time मुझे confidence आ गया to sort of stand neck to neck with anybody because I feel कि वो बहुत जरूरी है कि आप अपना किरदार बन के सेट पे आए and you don't bring all that baggage of you are from a certain place और सामने वाले कोई certain जगह पे है. All that I look for on set is अगर कोई मेरे से senior है तो मैं उनसे कितना सीख सकती हूँ. And I feel of course I've also had ups and downs where not every film was critically acclaimed, not every film was a success. But I think जितना important success है उतना important failure भी है because failure teaches you of course more than success ever can. तो जब आप कोई गलती करते हैं तो भी आप सीखते हैं कि अच्छा मुझे ये दोबारा नहीं करना, या where is the direction where I'm going into. But I think I've been very lucky क्योंकि मेरे को जितने भी किरदार अभी तक मिले हैं, I feel अगर एक बड़ी फिल्म भी है where you have a small role, so I'm okay with that also till the time वो रोल थोड़ा impactful रहे. Like even in the Dhanush film Tiruchitrambalam, my character is not so it's not very lengthy, but still people noticed कि हाँ this left an impact in a certain way. That's why I remember having that conversation with Dhanush जहाँ मैंने धनुष को बोला भी था, मैंने कहा धनुष मेरा जितना भी पार्ट है just make sure that it's like
I spoke to the director, I spoke to Dhanush, and I made sure that we added certain elements कि वो ऐसे नजरअंदाज ना हो जाए film में, because it is actually a story of Dhanush and Nitya. And I was glad कि जब लोगों ने देखा तो they did notice my character also. So I think मेरे हाथ में क्या है, it's just to give my best to the character I'm playing. उससे ज्यादा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वही मैंने सीखा है. और audience is very intelligent. वो देखती हैं, वो they can notice very quickly if you're good at your craft or if you're not. So I think I've just been lucky with that support also from the audience. Now, for example, जैसे आप अगर आप जूनियर एनटीआर के साथ में अगर आप काम कर रही हैं, नाउ जैसे आपने कहा कि दैट इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए एक्टर्स से, लेकिन कंसिडरिंग जैसे तारक की जिस तरीके की फैन फॉलोइंग है वो आई थिंक गैर मामूली है. इट इज एब्सोल्युटली अनरियल सॉर्ट ऑफ फैन फॉलोइंग. सो आपको जब आप फिल्म को शूट कर रही हैं और ऑब्वियसली सबको पता है कि दैट यू आर शूटिंग अ फिल्म विद सिड तारक फॉर एग्जांपल, तो कैसा कैसा आपको आपको रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे? बिकॉज फैंस जो होते हैं वो तो दे लाइक टू डिक्टेट टर्म्स, कि इसमें क्या होगा, ये ऐसे करना, वो ऐसे करना, which can be quite a handful, especially like say someone like say Tarak for example. So what sort of approach is that you have in such a situation? I think the fan ka thing is more pressure for Tarak than it has ever been for me, especially for his fans. Like he has a certain pressure that there's a certain thing his fans expect out of him. And the film that I did with him, जो मैंने जयला बच्चू साथ करी थी उनके साथ, उसमें 3 different kinds of characters he was playing in the same film. तो उनके लिए ज्यादा प्रेशर था टू डिलीवर, उनके लिए ज्यादा प्रेशर था. बट आई डोंट थिंक वो ये सब सोचते हैं जब वो सेट पे होते हैं. आई थिंक वो भी जब सेट पे होते हैं, दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम. जब भी वो सेट पे होते हैं, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर, ही इज नॉट तारक ऑन सेट. So he doesn't come with that baggage that I'm a huge star. He's a very down to earth person on set, and he's a very normal guy. Like that is what made me also feel very comfortable. मुझे कभी नहीं लगा oh my god इतने बड़े स्टार के साथ मैं काम कर रही हूँ. वो बहुत ही नॉर्मल इंसान की तरह आते हैं, बट ही गिव्स इट हिज ऑल जब वो सीन कर रहे हैं. आई थिंक ही गिव्स इट हिज ऑल टू हिज क्राफ्ट, एंड दैट्स व्हाई ही हैज फैंस. इट्स नॉट लाइक कि वो फैंस के बारे में सोचते हैं, वो प्रेशर लेते हैं और फिर वो एक्टिंग करते हैं. आई थिंक वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं और ऑटोमेटिकली उनके फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही इज सो ऑनेस्ट टू हिज क्राफ्ट. एंड आई थिंक जितना भी अगर वो बैगेज लेते भी होंगे तो वो शायद आई थिंक वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन नॉट ऑन सेट. मैंने सेट पे कभी नहीं देखा. सेट के बाहर शायद होता होगा, बट नॉट नेवर ऑन सेट. So I spoke to him and he said that Jayala, it's maybe one of his best performances personally as an actor. So what do you think was so special about the film and the performance? I have seen him switch from, तो उनके 3 अलग अलग किरदार हैं उसमें. एक है जो जिनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, और एक है जो बहुत ही विलेनिस सॉर्ट ऑफ किरदार है उनका, और एक बहुत ही स्वीट सा है. तो जो स्वीटर वर्जन था वह उनके साथ थी. आई वाज पेयर्ड विद दैट guy in Jalapakush. I was paired with the sweeter one. तो मैंने वो साइड देखी उनकी, बट आई रिमेम्बर मैं सेट पे रुक जाती थी काफी टाइम, बिकॉज आई वांटेड टू सी हिम ट्रांजिशन इनटू द अदर कैरेक्टर्स, कि वो कितनी अच्छी तरह निभाते हैं और वो कैसे फॉर मी इट वाज अ लर्निंग. मेरे लिए वो एक फिल्म स्कूल था टू सी हिम गेट सो इजीली स्लिप इनटू दोस कैरेक्टर्स सो इजीली. और एक सीन था जिसमें उन्होंने तीनों किरदार निभाने थे. तो वो तीनों किरदारों में like he was so apt in all 3 that I didn't see Tarak, I saw Jay, I saw Lava, I saw Kusha. So I think for me it was a great learning working with how he gets into the character and how he does everything. I think that's why he is where he is, because he gives it his all. Okay, now जैसे आपका जो शुरुआत थी, आपका जो आपका स्कूल का आपका टाइम था, वो खासा आप टॉम बॉयिश आपका एक अप्रोच था और बहुत ही दिलचस्प सी आपकी कहानी है बचपन की. मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने उसमें जिक्र किया कि दैट इन योर यूथ, इन योर अर्ली पार्ट ऑफ यूथ, अर्ली 20s आई बिलीव, सो कुछ हद तक मतलब आप डिप्रेशन और इससे भी आपने डील किया, एंड दैट इज समथिंग दैट स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है. ये सारे तजुर्बों ने, एक्सपीरियंसेस ने आपको एज एन एक्टर कैसे आपको इंस्पायर किया, एंड हाउ हैज इट इंपैक्टेड यू एज एन एक्टर? आई फील पेन is a beautiful emotion. I mean, I think जितना आपको पेन सिखा सकती है लाइफ में, सफरिंग सिखा सकती है, उतना आपको कोई और चीज नहीं सिखा सकती. Comfort can never push your boundaries, but pain and suffering, they push your boundaries. And I think आप जितना सफर करते हो लाइफ में, I know it's weird to say that, but आप जितना सफर करते हो उतना आप ग्रो करते हो एज अ पर्सन. तो ये जितनी भी सफरिंग मैंने whatever that I suffered, and I think everyone suffers in life in some phase or the other. मैंने जितना भी सफर किया है, I've always used it as a tool
to help me grow as a person. तो मैं कभी bitter नहीं हुई उन experiences को लेके, मैंने सिर्फ उन experiences से सीखा है, और मैंने सीखा है इसलिए मैं ज्यादा empathetic बनी हूँ as an actor also, because every time I would see कि ये मेरा किरदार है, I would understand where it is coming from. You know, your judgment drops, आपकी judgment सारी गिर जाती है जब आप set पे आते हैं, आप नए नए किरदारों के बारे में पढ़ते हैं, आप उनकी बैक स्टोरी जानते हैं. तो on set of course there's a learning experience that you go through, but obviously आप personal life में भी जो suffer करते हैं या जो the pain that you go through also helps you become a better actor. I think it's a mix of both things. मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रहा था, तो आपने उसमें जिक्र किया कि अभी जो पठान की जो कामयाबी हुई है, तो आपको यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट शाहरुख खान, एंड apparently you are a Shah Rukh Khan fan as well, and you are literally hoping that it works entirely for him. क्यों जरूरी फील होता है आपको एक एक्टर के नाते कि that कोई और एक्टर आपको इंस्पायर करे, उनकी कामयाबी को आप लुक फॉरवर्ड करें, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? I think मेरे लिए, see, of course Shah Rukh Khan is Shah Rukh Khan, but I feel more than the actor that he is, I love watching him speak. मुझे बहुत पसंद है जब वो बातें करते हैं, बिकॉज उनके हर इंटरव्यू में आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं. I've seen his TED talks, I've seen the way he talks. I think of course as an actor also, but I feel even as a person he inspires me a lot. इसीलिए मुझे, I get inspired by him as a person more than anything else. Like I want to know what struggles he went through. I want to know, वो भी दिल्ली से हैं, उन्होंने भी शुरुआत करी, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, and he's become what he's become. तो मुझे वो चीज बहुत इंस्पायर करी, उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायर करी, उनकी लर्निंग्स बहुत इंस्पायर करती हैं. एंड ही इज सो वाइज, एंड द वे ही स्पीक्स इन इंटरव्यूज, you can see that this person's also gone through a lot, and you see that wisdom, and you see that he's always saying something beautiful. Like उनके शब्द भी जो यूज करते हैं, वो even if he throws those one liners, he's so witty. So I think for me, I like him more as a person. Of course he's a great actor and he's this enigma, but I really relate to him somewhere as a person. And I love watching him talk. For me, he inspires me as a person more than anything else. Right. विजय सेतुपति के साथ में आपने पहले भी आपने काम किया हुआ है, एंड यहाँ पर भी आपने काम किया हुआ है. Do you in a way find it fascinating कि that बहुत बार एक्टर्स के साथ में एक कॉन्सेप्ट होता है कि that they need to be chiseled, that they need to be picture perfect, and they need to be very very prim and proper as far as their physicality is concerned. लेकिन विजय सेतुपति इस तरीके के एक्टर हैं कि जब वो पर्दे पे आते हैं तो पब्लिक उनके लिए रूट करती है, तालियां बजाती है. लाइक he's got like a crazy fan following. I'm sure that आपको तो अंदाजा ही है. आप do you feel that ये भी एक तरीके का stereotype है कि that certain physicality होना चाहिए एक्टर के पास में, and a certain way he or she should look? डिपेंड करता है, आई थिंक डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. इट्स रियली नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू बी एट योर फिटेस्ट बेस्ट ऑल द टाइम. हो सकता है मैं एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जो बहुत रिलेटेबल है, उसमें मैं बहुत फिट नहीं लग सकती, बिकॉज लेट्स इफ इन ऑल ऑनेस्टी ऑफ कोर्स लोगों को फिटनेस में इंटरेस्ट है, बट नॉट एवरीबडी इज लाइक ऑलवेज वेरी वेरी फिट. यू नो व्हाट आई मीन? लाइक वेयर everyone's like normal looking, they are not everyone looks like an athlete, and not everyone has to look like one. And I feel fitness जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर फिट नहीं है तो आप काम ही नहीं कर सकते. It depends on what character you're playing. It depends on how good at you are at your job also. जैसे I think विजय सेतुपति sir specifically, he's so good at his craft कि आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उनकी physicality पे. You'll be taken by the way he's delivering the dialogues. You'll be taken by the way he makes you emotional, और उनमें एक अलग ही क्वालिटी है which works for him. Of course कल को मुझे लगता है अगर ऐसा किरदार होगा जहाँ उनको he has to do a physical transformation, he'll work on that also. जैसे अभी recently उन्होंने एक पिक्चर डाली थी जिनका और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उनको, because he had actually lost weight and he said my body wasn't supporting me so much, तो मैंने decide किया that I want to lose weight. But that's not the first thing that should be in your head, that I need to be so fit. I think you need to work on your craft, and it's nice if you are fit also, but it's okay even if you're not. I think अगर आप एक्टर हैं तो आप अपनी एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान दें, और फिटनेस जरूरी है लेकिन not more than your craft. I think that is why you're here. You're an actor first and then everything else.